Continue. Okay. So, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Welcome to all of you in the session of personality development. We are meeting for the fifth day, and today's topic is quality of life. As I have coined a term, quality of life. Now, what will your mind start processing? May I know? Hello. May I know what does quality of life mean to you? Sir, how we live our life. Okay. So means, and most of you are thinking like quality of life means if we have a bank balance, we may live a good life. Am I right? If we have a car, we may live a good quality of life. Like this, if we are wearing good clothes, that means we can live a good quality of life. But what I think, this is not up to the point, means the definition of the quality of life. Then what is it? As one of you have mentioned that, can I know what you have mentioned quality of life means? Sir, in what way we living our life? Okay, good. Means how joyful we are within yourself. है ना? How joyful we are within ourselves. So to become joyful, what we usually do, we start setting different goal. And for setting different goal, we starting living our life in different conditions. और फिर क्या होता है? If we will not able to achieve that goal, we started compromise within ourselves. हम लोग खुद से क्या करने लगते हैं? कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं. Am I right? Hello? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. But if we will compromise with your life, with the standard of life we want to live, then how we will live our life? Means what we started doing, that we started try to be in peaceful mode. Think करते हो कि peaceful is the entire goal, है ना? कि if I will live our life peacefully, means we are living a good quality of life. But no, if you are thinking that peaceful is the entire goal, then this is not correct at all. Then what does peaceful mean? Peaceful means not messing our mind. To know how to conduct energy, to know how to conduct emotions, to know how to conduct mind. It is not a rocket technology or so-called rocket science. For example, you have a dog at your home. Then what does peaceful mean to that dog? If you will give or provide food to that dog, the dog may feel peaceful. And if you will not provide the food,
the dog may not be peaceful. What does this mean? This means how we are dealing our internal thing, that's matter. Am I right? For Yes, example, sir. Sir. we are driving a car and wants to turn our car to the left side. But due to some error or due to some fault, our car turned towards right side. Now the question is, can you be peaceful? No, Hello? sir. No, sir. No, No. sir. No, sir. No, sir. What does it mean? It means you started thinking about your car, your steering. It means vehicle was out of control. Then you will move towards repairing center and it will become correct. But life is not simple like a car. है ना? It is like a super computer or more than that. Now the problem is not most of the people find out the keyboard of the supercomputer. For example, if you have a highly sophisticated machine and you will not able to conduct that machine smoothly, then what will happen? You will feel bored. You will start compromise कि यार छोड़ो, let it go. मैं इसके साथ interact ही नहीं करूंगा. You will feel like this. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. It will create many problems to us. And the life is just like a super computer. For example, I am taking an example of breathing. Breathing pattern may change as per our body movement. If I am sitting straight forward, I may not feel any difficulty. But as I will assign a curvical shape to our body, there may be a chance that we feel difficulty in breathing. As we start feeling difficulty, our mind will not peaceful because we started feeling about difficulty. Now, what most of us thought that peaceful is the entire goal in our life. But not. Peaceful is the most fundamental requirement that we need in our life. So if you are thinking that you are going to set peace as your highest goal, so please do not ever set as peace as your highest goal. Otherwise, you will only rest in peace. है ना? So to be peaceful in our life is the first thing, isn't it? Hello? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. If we want to do anything sensibly in our life, we must be peaceful mind. But what we do, we generally start thinking about the others, about our outsider, what outside world will think about me. So, as I have mentioned in all the earlier section or session, that do not think about outside world. Do not think about outsiders.
just try to develop your inner engineering. What does inner engineering mean? If you want to live a life, if you are living the life you want, it means you are well in your field. If you are not feeling good by living the life you are living, it means you are not on a good track. No, quality of life depend upon something. What was that thing? The first one is the word we speak. For example, if you are interacting with someone, the first impression is your look, है ना? कि हाँ भाई आप कैसा दिख रहे हो? But the next one, as you started talking, as you started flowing the word from your mouth, the person who is in front of you will start thinking about you, will start making an image about you, कि आप कैसे सोचते हो, आप कैसे चीजों को डिलीवर करते हो, आपकी सोच क्या है, आप किस टाइप के मेंटेलिटी के पर्सन हो. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. And I have read a quote that words are the most powerful drug on earth. मीन्स सबसे जहरीला पदार्थ कोई है इस पूरे वर्ल्ड में, अर्थ पे, तो वो वर्ड है. यू कैन मोल्ड एनीवन बाय यूजिंग योर वर्ड. मीन्स आप किसी को हर्ट कर सकते हो, किसी को हैप्पीनेस पहुंचा सकते हो किसी के लाइफ में, किसी को सैडनेस से एंजॉयमेंट की तरफ मोड़ सकते हो. It all depends upon your word, how your word are acting for the person you are interacting with. Now there are two things. The one thing is internal dialogue and other thing is external dialogue. Internal dialogue we call it as thought, है ना, जो हम लोग अपने अंदर ही सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं और किसी के साथ शेयर नहीं करते. दैट इज नोन एज, आप लोग के टर्म में थॉट्स और मेरे टर्म में इंटरनल डायलॉग. एक्सटर्नल डायलॉग मीन्स द वन दैट यू ट्रांसफर फ्रॉम योर साइड टू अदर साइड. मीन्स जब भी आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आप डिलीवर करते हो चीजों को, आप बात करते हो, तो वो जो चीजें जो डिलीवर करते हो तो सामने वाला पर्सन जो समझता है, गेट करता है, दैट इज द एक्सटर्नल डायलॉग. तो whenever you are using your word, use your word consciously, precisely. ऐसा तो नहीं कि I am using a word that is hurting someone. If you are using such type of word, it means your quality of life is not up to the level. If you are thinking that you have money, you have bank balance, you have car, you have wore a good cloth, that doesn't mean anything. सामने वाला पर्सन यदि आपसे खुश नहीं है तो उसके लिए आप कुछ मैटर नहीं करोगे. आपका धन दौलत वेल्थ क्या है, कैसे आप हैं, कुछ मैटर नहीं करेगा. उसको क्या मैटर करेगा? Those who are talking to them with so nicely. Am I right? So Yes, quality sir. of life depend upon the first thing, the word we speak. Now the second thing, quality of relationship. Quality of life depend upon the quality of relationship we have. Means, are you feeling like you are living in a cage
क्या आपको ऐसा फील होता है कि आप एक पिंजरे में रह रहे हो? इफ यू आर लिविंग अ लाइफ लाइक अ केज, इट मीन्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट अप टू द लेवल। मान लेते हैं कि मेरे फादर एकदम शानो शौकत में रखते हो मेरे को, लेकिन इंटरनल फीलिंग व्हाट आई एम फीलिंग, दैट आई एम लिविंग माई लाइफ इन अ केज। मेरे को इंडिपेंडेंस ही नहीं है। मैं एक बाहर जाके समोसा भी नहीं खा सकता। मैं किसी से इंटरेक्ट अपने खुद से करना चाहूं कर नहीं सकता। मैं कोई बात किसी के साथ शेयर करना चाहूं कर नहीं सकता। मैं कोई बात इफ मेरे को चुभ रही है, दैट आई गॉट बॉदर्ड अबाउट द थिंग आई वांट टू शेयर विद द पेरेंट्स, आई कांट। इट मीन्स वी आर लिविंग आवर लाइफ इन अ केज, एंड इफ यू आर लिविंग अ लाइफ इन अ केज, it means you are not living a good quality of life. The third one, your life mission. That what we want, can we achieve that? Do we achieve that? And for achieving that thing, what we should do? The mission of our life qualify the quality of our life. For example, मेरा मिशन क्या है कि भाई मैं एक रूम में बैठा रहूं और बस गाना चलता रहे, दिन रात सोता रहूं, खाना आए खाए फिर सो जाऊं, फिर खाना आए फिर खाऊं फिर सो जाऊं। तो इस ऐसे लाइफ के जीने का क्या मतलब है? इफ यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू योर सोसाइटी, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग हेल्प टू अदर्स, इफ यू आर नॉट हेल्पिंग मीन्स ये नहीं कि आप पैसे से हेल्प कर रहे हो। यू कैन हेल्प एनीवन, not only by money, not only by providing something like physically, you can help anyone mentally. And mental help ना बहुत internal प्रभावित करता है चीजों को। तो your mission of life qualify your quality of life, means what is your aim, what is your goal? Because if your aim is like you want to become a PM of your country, तो आपकी फ्रेंडशिप का गोल, आपका माइंड सेट वैसा ही होगा। इफ आई वांट टू बिकम अ बेगर, तो मेरी फ्रेंड सर्कल, मेरा सोच, सब चीज उसी के जैसा होगा। इफ आई वांट टू बिकम अ, और यू वांट टू बिकम अ आईएफएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, और एनी मैनेजर, और अ सीईओ ऑफ योर कंपनी, ऑफ एनी कंपनी, तो यो आपकी माइंड सेट वैसी होगी। तो इफ यू वांट टू live a good quality of life, then your mission should be good. Your aim should be good. Your aim of life should be quite good. Now, the next one, your health and fitness level. What does it mean? It only means that if you will not feel healthy, if you will not feel fit, you will not able to do any work perfectly, in perfect manner. Means you need to take care of yourself. Means you must do exercise on daily basis. ऐसा तो नहीं कि बस एक रूम में रह के आराम कर रहे हैं। तो आफ्टर अ सर्टेन एज योर लाइफ विल बिकम लाइक, जैसे आप अपने देखते होंगे दादा दादी को बहुत प्रॉब्लम्स होता है लाइफ को जीने में, है ना। और मॉडर्न वर्ल्ड, एज यू आर नोइंग, कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं that we are using, all are getting mixed with some other fertilizers or something else.
तो if you want to live a good life, you should do exercise. You should have a good food. ऐसा तो नहीं कि आप डेली जंक फूड ही बस यूज कर रहे हो. You should sleep well, है ना. ऐसा नहीं कि बस एक दिन 1 घंटा सोए, दूसरा दिन 2 घंटा सो रहे हैं, तीसरा दिन 3 आवर्स सो रहे हैं, नेक्स्ट डे 4 आवर्स सो रहे हैं, फिर फिफ्थ डे 1 आवर सो रहे हैं. No, this is not good at all. Means, are you living your life in a routine way? Are you living your life having a good food with exercises? If you are following this thing, then it means your quality of life is good. Now the next thing is work ethic. As I have defined the ethics of life in yesterday's session. Work ethic means, are you happy what you are doing? Are you satisfied with the thing that you are doing? If you are not, then please move from that condition. Please forget about that thing. कि यार मेरे को इतना पैसा मिल रहा था, उस कंपनी में वर्क कर रहा था. But if your ethics is not valuable in that company, please leave that company. क्योंकि आप हैप्पी ही नहीं हो, तो इट मीन्स योर एज इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. हम लोग ये सब सोचते नहीं है, लेकिन ये होता है. Why? The people of means ancient time are living like 1,000 years, 800 years, 700 years. उनके पास तो इतना साइंस टेक्नोलॉजी भी नहीं था. It they are living. Why? Because they are internally happy. So if you want to live a quality of life, you must be internal happiness within yourself. Now the next thing, self-love or self-aware. Are you appreciating yourself if you are doing good in any field, or just doing like others? कि भाई मैं किसी एग्जाम में टॉप कर गया या टॉप कर गई, but yet I am not appreciating my hard labor. तो उसका कोई मतलब नहीं है. If you are not appreciating yourself, how can someone feel that you will appreciate others? If you are not loving yourself, how you can love others? So this is the most important thing. Love yourself. Care for yourself. Now the next thing is your environment. In which type of environment you are living? क्या आप ऐसे environment में live कर रहे हो जिस environment में बस दिन रात साउंड ही साउंड है? जिधर निकल रहे हो बस आवाज ही आवाज आ रहा है. And the type of sound may differ. If you are living a life in such surrounding जिसमें दिन रात बस झगड़ा ही हो रहा है, तो your mentality will be like that. Your mental state will be like that. आपका भी माइंड किसी भी से भी आप बात करोगे ना, तुरंत एग्रेसिव हो जाएगा. Are you surrounded by good friends or not? क्या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बस ड्रग्स ले रहे हैं? क्या आपके फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं? क्या आपके फ्रेंड्स स्टूडियस हैं? क्या आपके फ्रेंड सम अदर फील्ड में एक्सपर्ट है? तो योर लाइफ विल बी लाइक दैट ओनली. द पीपल यू आर सराउंडेड विथ. यदि ड्रगिस्ट के साथ आपका रिलेशन है, आप उठते बैठते हो, तो आप भी ड्रग के साथ जीने लगोगे. आपको पता नहीं चलेगा. यू विल फील और यू विल स्टार्ट advertising yourself. You means
You will start convincing yourself, नहीं इनको कुछ नहीं होता है, ये भी एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय कर रहा हूं. But if your aim is something different from what you are living, तो आप क्या करिए? Please leave that surrounding. Please stay far from that surrounding. So these all the topic, the word you speak, quality of relationship, your mission of life, your health and fitness level, your work ethics, self-love, and your environment. These things determine your quality of life. And for this thing, there is no requirement of any other thing. It all depends in ourselves. That how am I doing this thing? If I am taking this thing consciously, then we must be in a good position, or our mental state be in a good position after some time. There may be a chance that whole society will question mark upon you, that ये बंदा तो ऐसा है, ये किसी से बात नहीं करता है, ऐसा है. But are you happy if you are doing something with that word? If you are feeling happy, it means you are living a good quality of life. And what does happy mean? Happy doesn't mean कि आप सो रहे हो और happy feel कर रहे हो तो वाह बहुत अच्छी life जी रहे हो. No. Are you adding some value to others' life? Are you developing your knowledge in the field that you are working with? और बस जितना knowledge है उसी पे टिके हुए हो. That original meaning of happy means that only. Okay, so I think I have delivered what I thought on a quality of life that we are living and how to improvise this, the quality of life. Okay, so if somebody wants to say something, they can. Hello. Yes. Do you sir. want to share your Yes, opinion on quality of life? No. Someone? Okay. What we should do, if your mind is asking some question, कि चलो ये question पूछ लेना चाहिए, तो you may ask. Do you want? No. No one. Good. No. For example, I am giving an example. अभी टाइम है तो चलिए एक एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ. Once upon a time, a sailor and his wife. Sailor means जो याट को समुद्र में सेल करता है ना, मीन्स जो ड्राइव करता है, वो अपने वाइफ के साथ एक बड़े समुद्र में यात्रा पे निकला हुआ था. तो क्या हुआ? दे गॉट स्टक इन बिटवीन द ओशन. बहुत एक बवंडर ऐसा आता है ना, बवंडर आया. तो वो स्टॉप कर दिया अपने याट को. ये आप सोच रहे होंगे कि बवंडर आया तो भाई वो रुक गया होगा, बट नॉट. द सेलर हैज नॉट स्टॉप देयर याट इन द ओशन. तो उसकी वाइफ पूछी कि भाई इतना आगे दिख रहा है डेंजर, बट एट यू आर ड्राइविंग योर यार्ड, व्हाई? तो irrespective of giving the answer, he take out his sword and put on her head
वो अपना तलवार निकाला और अपनी वाइफ के हेड पे रख दिया, है ना। एंड फिर पूछा, क्या आपको डर लग रहा है? आर यू फीलिंग स्केर्ड? तो उसकी वाइफ बोली, नो, विद अ स्माइल। तो वो पूछा, व्हाई? तो वो बोली, बिकॉज यू आर माई वेल विशर। तो फिर वो बोले, as you are thinking that I am your well wisher, that I will not harm your body like that. I am thinking that God is my well wisher. What the God will do will be beneficial for me. What the means? Why we should think about the other conditions? मैं क्यों सोचूं कि यार बॉन्डर आ गया तो मैं अपने जो वर्क कर रहा हूं इसे रोक दूं? क्यों नहीं मैं दूसरा अप्रोच से इस वर्क को आगे प्रोसीड करूं? तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है, दैट कभी आपको ऐसे खुद पे लगे, विश्वास ना हो, है ना, खुद पे ट्रस्ट ना हो कि मैं ये वर्क कर सकता हूं या कर सकते हो, तो सब चीज गॉड पे छोड़ दो, है ना, कि जो भी होगा अच्छा होगा। बस व्हाट यू शुड डू योर लेबर हार्ड। जो भी वर्क कर रहे हो उस फील्ड में वर्क करते रहो और ट्राई टू बी इन हैप्पी मूड, एंड जस्ट यही आप करोगे तो यू विल फील दैट at a situation in your life you will be at a good position more than what where you think। जहां तक आप सोच रहे थे उससे अच्छे पोजीशन पे आप रहोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय। Bye, Thank sir. you, sir. Bye, sir. थैंक यू, नाइस टू टॉक टू यू ऑल। बाय।